Hello viewers, I am Tarang Kumar Bundwal, Assistant Professor in St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurgaon. The following video is prepared as per the syllabus and course outline of Maharshi Dayanand University. However, are mostly general topics which cover the working and theoretical aspects of civil engineering. For better understanding and conceptualizing clearly, please do not skip the video and watch till end. We will be discussing about related important questions, feasibility and applications. Let's start the video. Hello students, hello everyone, welcome back to the channel. In today's lecture, we'll continue with the subject Engineering Geology, which is in 6th semester of Maharishi Dayanand University. And the topic of discussion today would be artificial groundwater recharge. We discussed a few points of artificial groundwater recharge in the previous lecture, and now we will go in details. So why do we need artificial recharge of groundwater? Average annual water resource in our river basins are estimated at 1869 billion cubic meters, of which utilizable resources are of order of 1086 billion cubic meters. Out of this, 690 billion cubic meter is available as surface water and the remaining as 396 BCM as groundwater. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंपैरिजन से कि ग्राउंड वाटर कंपैरेटिवली कम है. द सोर्स ऑफ ऑल दिस वाटर इज रेन और स्नो. रेन और स्नो की वजह से ये सब पानी ग्राउंड तक पहुंच पाता है. द ह्यूज ग्राउंड वाटर स्टोरेज ऑफ 396 बिलियन क्यूबिक मीटर इज द रिजल्ट ऑफ rain and snow melt water percolating through various layers of soil and rocks. However, the amount of percolation varies greatly from region to region and within the same region from place to place depending upon the amount and pattern of rainfall. And rainfall further depends on number and duration of rainy days, rainfall amount and intensity, characteristics of soils and rocks, porosity, cracks, loose joints in rocks, the nature of terrain, hill, plateau, plains, valleys, and other climatic factors like temperature and humidity. As a result, availability of water from subsurface storage varies considerably from place to place. तो जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पे डिस्कशन में कि ग्राउंड वाटर पहुंचता है रेन्स और स्नो के थ्रू, और ये हर जगह फॉलो होता है, पर हर जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन, जियोलॉजिक कंडीशंस अलग अलग होती हैं. कोई एरिया हिली हो सकता है, कोई एरिया प्लेन हो सकता है, कोई वैली एरिया हो सकता है. इसके अलावा वहाँ की सॉइल और रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग हो सकती है कि वहाँ पे जो सॉइल है, जो रॉक्स हैं, उनमें कितना परकोलेशन अलाउड है, किस टाइप का रॉक है, या फिर वहाँ पे रेनफॉल की अमाउंट, इंटेंसिटी क्या है. इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी. In most low rainfall areas of the country, the availability of utilizable surface water is so low that people have to depend largely on groundwater for agriculture and domestic use. तो बहुत सारी जगहों में हमारी कंट्री में ही एग्रीकल्चर के लिए और डोमेस्टिक यूज के लिए ग्राउंड वाटर पे ही लोग रिलाय करते हैं. जैसे कि आप लोगों ने अरेंजमेंट्स देखे होंगे, सबमर्सिबल्स यूज करते हैं, हैंड पंप्स यूज करते हैं. Excessive groundwater pumping in these areas, especially in some of the 91 drought-prone districts in 13 states, has resulted in the groundwater levels. And the problem has been further compounded due to large-scale urbanization and growth of mega cities, which has drastically reduced open lands for natural recharge. In hard rock areas, there are large variations in groundwater availability, even from village to village. So in order to improve this situation, it is necessary to recharge groundwater artificially. So now we will discuss about the advantages of artificial recharge of groundwater. So following are the main advantages of artificially recharging the groundwater aquifers. First of all, there is no large storage structures needed to store water. Structures required are small and cost effective. तो कोई बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं चाहिए, जो भी स्ट्रक्चर्स हमें चाहिए होते हैं वो
वो छोटे होते हैं और सस्ते होते हैं। एनहांस द डिपेंडेबल यील्ड ऑफ वेल्स एंड हैंडपंप्स। हैंडपंप्स और ये वेल्स की ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली यील्ड भी बढ़ जाती है। नेग्लिजिबल लॉसेस एज कंपेयर टू लॉसेस इन सरफेस स्टोरेज, इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं, वाटर लॉस। इम्प्रूव्ड वाटर क्वालिटी ड्यू टू डाइल्यूशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सॉल्ट्स, जैसे कि हमने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इसमें ग्राउंड वाटर की क्वालिटी बेटर हो जाती है डाइल्यूशन की वजह से। नो एडवर्स इफेक्ट्स लाइक इनंडेशन ऑफ लार्ज सरफेस एरियाज एंड लॉस ऑफ क्रॉप्स। नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, ऑब्वियसली अगर वाटर ग्राउंड वाटर अवेलेबल होगा तो पॉपुलेशन को रिलोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ एनर्जी फॉर लिफ्टिंग वाटर स्पेशली व्हेन राइज इन ग्राउंड वाटर लेवल इज सब्सटैंशियल। तो क्योंकि ग्राउंड वाटर का लेवल जब ऊपर आ जाएगा तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम ही होगी पानी को सरफेस तक लाने के लिए। यूटिलाइजेस द सरप्लस सरफेस रन ऑफ विच अदरवाइज ड्रेन्स ऑफ, जो भी सरफेस रन ऑफ होता है रेन के दौरान वो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं जो कि ड्रेन हो सकता है। कमिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज फॉर रिचार्ज, द फर्स्ट स्टेप in planning a recharge scheme is to demarcate the area of recharge. जिस एरिया में रिचार्ज की जरूरत है पहले उन एरिया को मार्क कर लिया जाए। Such area should be as far as possible be a micro watershed 2000 to 4000 hectare or a mini watershed 40 to 50 hectare. However, localized schemes can also be taken up for a benefit of single hamlet or a village. So these are the places where the artificial recharge of groundwater should be done. The place where groundwater levels are declining due to overexploitation, जहाँ पे जरूरत से ज़्यादा यूज हो रहा है, where substantial part of aquifer has already been desaturated, that is regeneration of water in wells and handpumps is slow after some water has been drawn, where availability of water from wells and handpumps is inadequate during the lean months, and where groundwater quality is poor and there is no alternative source of water. So we will discuss a few sources of water recharge. Before undertaking a recharge scheme, it is important to first assess the availability of adequate water for recharge, and following are the main sources for which they are to be identified and assessed for adequacy. So first is precipitation, which is rainfall over the demarcated area. It is a natural process. Large roof areas from where rainwater can be collected and diverted for recharge. So कुछ स्ट्रक्चर्स जिनका एरिया लार्ज, रूफ एरिया काफी लार्ज है, वहां पे कलेक्ट करके डाइवर्ट कर सकते हैं रिचार्ज के लिए। कैनाल्स फ्रॉम लार्ज रिजर्वॉयर्स फ्रॉम विच वाटर कैन बी मेड अवेलेबल फॉर रिचार्ज, कैनाल से पानी लाया जा सकता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। Natural streams from which surplus water can be diverted for recharge without violating the rights of other users. अगर कोई स्ट्रीम है उसमें कोई सरप्लस वाटर है जो कि रन ऑफ की कंडीशन में है, उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं रिचार्ज के लिए। Properly treated municipal and industrial wastewaters, this water should be used only after ascertaining its quality. तो जो भी लोकलाइज्ड अथॉरिटीज हैं उनके थ्रू ट्रीटेड वाटर भी हम डाइवर्ट करके रिचार्ज के लिए यूज कर सकते हैं। इन सिटू प्रेसिपिटेशन is available at every location but may or may not be adequate for recharge purposes. In such cases, water from other sources may be transmitted to the recharge site. Assessment of available resources of water would require consideration of the following factors. So available quantity of water, time for which the water would be available, quality of water, and the pre-treatment required, conveyance system required to bring the water for recharge site. Now the important factor is infiltration capacity of soil, which we discussed in the introduction part. So infiltration capacity of soil is an important factor that governs the rate of saturation of the Beddoes zone and thereby the efficacy or otherwise of a recharge scheme
Infiltration capacity of different soil types are done by field tests by state agriculture departments and or land use surveys. This data or information together with maps showing infiltration rates is usually available in departmental reports. So next is aquifer suitability. This depends mainly on storage coefficient, availability of storage space and permeability of that particular aquifer in that location. Very high permeability results in loss of recharged water due to subsurface drainage, where as low permeability reduces recharge rate. तो अगर permeability बहुत ज़्यादा high होगी तो भी loss है, low permeability होगी तो भी loss है. In order to have good recharge rate and to retain the recharge water for sufficient period for its use during lean period, moderate permeability is needed. Older alluvium, buried channels, alluvial fans, dune sands, glacial outboards, etc. are the favorable places for recharge. तो इसको आप mark कर लें, ये important है. In hard rock areas, fractured, weathered, and cavernous rocks are capable of allowing high intake of water. The basaltic rocks, that is those formed by lava flows, usually have large local pockets which can take recharge water. Next is hydrometeorological studies. So these studies are undertaken to understand the rainfall pattern and evaporation losses, and thereby determine the amount of water that would be available from given catchment and the size of storage to be built. The main factors to be considered are, तो ये डेटा क्रिएट करने के लिए और किसी पर्टिकुलर एरिया में साइज डिटरमिन करने के लिए, स्टोरेज साइज डिटरमिन करने के लिए ये फैक्टर्स है. मिनिमम एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग द प्रीवियस 10 इयर्स, तो हमें ये डेटा हमारे पास होना चाहिए पिछले 10 साल का मिनिमम एनुअल रेनफॉल का. नंबर ऑफ रेनी स्पेल्स इन अ रेनी सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच स्पेल, एक रेनी सीजन में कितनी बार बारिश होती है और एक बारिश कितनी देर तक चलती है. अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ईच रेनी स्पेल, कितना सेंटीमीटर रेन होती है. रेनफॉल इंटेंसिटी मैक्सिमम 3 hourly, 6 hourly, etc. as may be relevant for a region. As a general guide, the one which causes significant runoff and local flooding should be adopted. तो जहाँ पे runoff ज़्यादा हो, flooding तक की नौबत आ जाए, उन rainfall intensities को consider करना चाहिए utilize के लिए. So hydrogeological studies. A detailed hydrogeological study of the project area and also the regional picture of hydrogeological setting is necessary to know precisely the promising locations for recharge and the type of structure to be built for the purpose. Hydrogeological studies जरूरी हैं ताकि हम दो चीजों को पता लगा सकें, एक तो promising location जहाँ पे recharge की जरूरत है और दूसरा type of structure जो कि recharge करने में help करेगा. Detailed information and map showing. तो इसके कुछ schemes हैं जिसमें हम कुछ इस तरीके से डेटा को डिपिक्ट करते हैं. Hydrogeological units demarcated on the basis of their water bearing capacities at both shallow and deeper levels. तो hydrogeological units को मार्क कर लिया जाता है shallow और deep levels पे. Ground water contours to determine the form of water table and hydraulic connection of groundwater with rivers, canals, etc. Depth to water table, maximum value, minimum value and mean value also. एम्पलीट्यूड ऑफ वाटर लेवल फ्लक्चुएशंस, पानी का लेवल कितना फ्लक्चुएट कर सकता है कि मैक्सिमम और मिनिमम कितनी वैल्यू पानी की वहां पे है. पीजोमेट्रिक हेड इन डीपर एक्विफर्स एंड इन देयर वेरिएशन विद टाइम, जो भी पीजोमेट्रिक हेड है डीपर जो गहरे एक्विफर्स है उनका, और समय के साथ वो किस तरीके से उनका पीजोमेट्रिक हेड चेंज होता है. ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजियोलॉजिकल यूनिट्स एंड द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट
And last is chemical quality of water in different aquifers. And this information is usually available with central or state groundwater board in that particular area. Information from local open wells. Artificial recharge schemes are site specific, and even the replication of the proven techniques are to be based on the local hydrogeological and hydrological conditions. However, following information from local wells need to be taken into consideration in planning such schemes. तो रिचार्ज स्कीम्स जो होती हैं वो साइट स्पेसिफिक होती हैं और वहीं का जो लोकल हाइड्रोजियोलॉजिकल डेटा है उसी पे बेस्ड होती है, पर उसके बावजूद भी कुछ ऐसी स्कीम्स को प्लान करने के लिए कुछ कंसिडरेशंस होती हैं जो कि कुछ इस तरीके से the unsaturated thickness of rock formations occurring beyond 3 meters below ground level should be considered to assess the requirement of water to build up the subsurface storage. The groundwater recharge process should aim at saturating this entire unsaturated zone. इस unsaturated zone को Vadose zone भी कहा जाता है. The upper 3 meter of the unsaturated zone should not be considered for recharging since it may cause adverse environmental impacts like waterlogging, soil salinity, etc. And the post-monsoon depth of water level represents a situation of minimum thickness of Vadose zone available for recharge, and this should be considered vis-a-vis the available surplus runoff in the area. After hydrogeological and hydrological studies, it is geophysical studies now. These studies are expensive and time consuming and require high levels of skills and sophisticated equipments. ये skill based study है जिसमें कि equipments की भी जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ expensive भी है. These are therefore economically viable for large groundwater development projects and not suitable for small artificial recharge schemes at local village levels. इसीलिए इनको large groundwater development projects के लिए यूज करना चाहिए, ना कि small local village level पे. The main purpose of applying geophysical methods for the selection of appropriate site for artificial recharge studies is to assess the unknown subsurface hydrogeological conditions economically, adequately, and unambiguously. Generally, the prime task is to complement the exploratory program. Most it is employed to narrow down the target zone, pinpoint the probable site for artificial recharge structure, and its proper design. The application of geophysical methods is to bring out a comparative picture of the subsurface lithoenvironment, surface manifestation of such structures, and correlate them with the hydrogeological settings. Besides defining the subsurface structure and lithology, it can identify the brackish, fresh groundwater interface, contaminated zone, and the area prone to seawater intrusion. Using common geophysical method, it is possible to model the geophysical models को यूज करके हम कुछ इस तरीके से अपना मॉडल क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक बड़े लेवल पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए सक्षम है. Stratification of aquifer system and spatial variability of hydraulic conductivity of the characteristic zone suitable for artificial recharge. Negative or non-productive zones of low hydraulic conductivity in unsaturated and saturated zones. Vertical hydraulic conductivity discontinuities such as dike and fault zone. Moisture movement and infiltration capacity of the unsaturated zone. Direction of groundwater flow under natural or artificial recharge processes. Salinity ingress trend and short duration depth salinity changes in aquifers due to varied abstraction of the recharge. Now the important part is quality of source water. So quality depends on chemicals and salts and the sediment load mixed or suspended in the water. So the problem which arise as a result of recharge to groundwater are mainly related to the quality of raw waters that are available for recharge and which generally require some sort of treatment before
being used in the recharge installations. They are also related to the changes in the soil structure and the biological phenomena which take place when infiltration begins, thereby causing environmental concerns. The chemical and bacteriological analysis of source water and that of groundwater is therefore essential. तो जो भी हम पानी मिक्स करने जा रहे हैं, जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या अवेलेबल पानी है, दोनों का केमिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस जरूरी है. A major, now talking about sediment load, a major requirement for waters that are to be used in recharge project is that they be silt free. Silt free जरूरी होना जरूरी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. Silt may be defined as the content of undissolved solid matter, usually measured in milligram per liter, which settles in a stagnant water or in flowing water with velocities, and which do not exceed 0.1 meter per hour. या तो स्टैग्नेंट वाटर में या हाई फ्लोइंग वेलोसिटी में ही वो सिल्ट नीचे सेटल आउट हो पाता है. For better infiltration and effective recharge, it is necessary to prevent clogging of soil pores. So how it can be done? This is one of the important considerations in planning an artificial recharge scheme. The usual methods to minimize clogging are periodical removing of the mud cake and dicing or scraping of the surface layer, installation of a filter on the surface, the permeability of which is lower than that of the natural strata. जो टॉप लेयर है उसको हम रिप्लेस करके एक आर्टिफिशियल फिल्टर लगा सकते हैं जिसकी परमेबिलिटी कंपैरेटिवली नेचुरल स्ट्रेटा से थोड़ी सी बेटर हो. एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और केमिकल्स टू द अपरमोस्ट लेयर, कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स और केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है. कल्टीवेशन ऑफ सर्टेन प्लांट कवर्स, notably certain kinds of grass, providing inverted filter consisting of fine sands, coarse sand and gravel at the bottom of filtration pits and trenches are very effective to hold water, and it can prevent clogs as well. Clogging by biological activity depends upon the mineralogical and organic composition of the water and basin floor, and upon the grain size and permeability of the floor. The only feasible method for treatment developed so far consists thoroughly of drying the groundwater and the basin. Now coming to the most important part, which is methods of artificial recharge of groundwater. So these methods can be broadly classified as, first is spreading method, which has further 3 parts. First is spreading within the channel. Next method is spreading stream water through a network of ditches and furrows. तो जो पहले तो सिर्फ चैनल के थ्रू अंदर ही स्प्रेड करना, दूसरा स्ट्रीम वाटर के थ्रू स्प्रेड करना, पर साथ ही साथ उसमें डिचेस और फरोज की और ज्यादा ब्रांचेस बनाना. नेक्स्ट इज पॉन्डिंग ओवर लार्ज एरिया, एक लार्ज एरिया में पॉन्डिंग कर देना. इसके भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं पॉन्डिंग ओवर लार्ज एरिया के. अलोंग स्ट्रीम चैनल विद चेक डैम्स, नाला बंड्स, ये पॉन्डिंग की जा सकती है स्ट्रीम चैनल के अलोंग, जैसे कि कोई चेक डैम्स हो गए, नाला बंड्स हो गए, वहां पे vast open terrain of a drainage basin that is with percolation tanks, या फिर कोई ओपन टेरेन हो बड़ा किसी ड्रेनेज बेसन का, जैसे कि परकोलेशन टैंक्स. मॉडिफिकेशन ऑफ विलेज टैंक्स एज रिचार्ज स्ट्रक्चर्स, या फिर कोई एग्जिस्टिंग विलेज टैंक्स हो लोकलाइज या विलेज में, जिनको आप मॉडिफाई करके रिचार्ज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं.
Next method is recharge shafts. So recharge shafts are further of two types. First is vertical shaft and the other one is lateral shaft. Third technique is injection wells. Fourth technique is induced recharge. And fifth technique is improved land and watershed management. So improved land and watershed management is further divided into four parts, out of which first is contour bunding, second is contour trenching, third is bench terracing, and fourth is gully plugging. So these are the major methods of artificial recharge, and we will discuss about each method in detail in the next lecture. Till then, keep studying, have a great time. Thank you. I hope you guys could understand and correlate the topics taught in today's session. If there is any query or subject matter issue, feel free to mail me at the given email ID. Live discussion sessions could also be used for discussion of doubts. Thank you.